Good morning, class. So today we'll start with exercise 7.4. This is based on basically combination. Clear? But yesterday also I told you the relation between permutation and combination. Like we are having NPR is equal to NCR multiplied by R factorial. Yeah, NCR. This relation I explained you yesterday also. Yeah. Now, this is your first relation which will be used. I've given you the explanation of this. Then your second relation is, which will be used is NC N minus R is equal to NCR. Now, how it came, just see. You know that what is NC N minus R? What is NC N minus R? Just see. We can write it as N factorial upon N minus R factorial. N minus R will be plus R. We are not getting it. Just see N minus R. We can write this into N minus R factorial. This is LHS we are solving. LHS it is N factorial upon N minus this is R. N minus R is R real right now. So I will done be on time. Yeah, so N minus R factorial minus this one N minus R factorial. If you remember, अगर याद नहीं है तो देखो NCR क्या होता है N factorial upon N minus R factorial into R factorial. तो यहाँ R ही था इसलिए R लिखा, यहाँ पे R क्या है N minus R है, तो N minus R factorial और N minus this N minus R जो यहाँ पे R बना हुआ है. अब आप इसको ओपन अप करो. दिस इज इक्वल टू N factorial upon N minus, इसको मैंने ओपन किया ब्रैकेट तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट. तो बचा क्या आपका R factorial into N minus R factorial which is equal to, you can see N factorial upon N minus R factorial into R factorial is what? NCR. Yeah. So NC N minus R is equal to NCR. We know that we have proved it also, but every time we will not prove it. If you will remember these all things, then it will be easy for you to solve some questions. They will be very easy, like in 1 marks they will come, then you don't have to solve each and everything. So I'm wrapping it. Next is your third relation, which you write down now. Just see NCA is equal to NCB implies either A is equal to B और या तो A और B बराबर होंगे तभी NCA NCB के बराबर होगा. और what else we can say? Or we can say that A is equal to N minus B और N is equal to A plus. ठीक है, ये बहुत important relation है. Just see what we are, इसी से आया ये. Just see this relation NC N minus R is equal to NCR. तो यहाँ क्या NCA is equal to NCB. ये कब possible है? जब A या तो B के बराबर हो. When A is equal to B, then it is possible. और suppose A और B बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? A is equal to N minus B. यहाँ A की जगह आप क्या लिख दो? N minus B. तो यही relation आ जाएगा ना? N minus R, N minus B, B. Clear? यहाँ A की जगह हमने क्या लिख दिया? N minus B. ये कब possible है? जब A की वैल्यू क्या होगी? N minus B. A की वैल्यू N minus B का मतलब क्या? A की जगह यहाँ लिख दो आप NC. A की जगह क्या लिख दिया हमने? N minus B और यहाँ B. तो यही तो रिलेशन हुआ N minus R जो हमने अभी प्रूफ किया था. तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ क्या था? NCA. तो ये कब पॉसिबल है? either A is equal to B or A is equal to N minus B, or you can say N is equal to A plus B. Now these types of relations will be used just once. One more is there. Fourth one. What it is? NCR plus NC R minus 1 is equal to N plus 1 CR. Now this I am giving you as homework. You can prove it by yourself. Clear? You know how to open it. NCR को कैसे open करते हैं? NCR minus 1 को कैसे open करते हैं? LHS से आप RHS ले आएंगे. Just go to LHS and then you will get RHS also. Let's start from LHS. Open this, open it, and take things common, and you will get the answer. Clear? So come to the exercise. If you have not written, write it down.
all the relations, and then we'll start with the exercise 7.4. Now just see in exercise 7.4, your first question is, open up your NCERT everyone. They are saying question number 1, if NC8 is equal to NC2, find NC2. Yeah, what they are saying, NC8 is equal to NC2, then find NC2. Clear? Now मैंने आपको अभी रिलेशन लिखा था अपने NCA is equal to NCB. क्या पॉसिबल है? या तो A B के बराबर है, या फिर हमने क्या लिखा था, N is equal to, N की वैल्यू क्या होती है? A plus B. तो N की वैल्यू क्या हो गई? N is equal to 8 plus 2, 10. So NC2 will be what? NC2 will be 10C2. Now you can calculate the value 10 factorial upon 10 minus 2 is 8 factorial into 2 factorial. Clear? So it will be what? 9 into 10 upon 2, that is equal to 9. 2 5s are 10, 9 5s are 45. So your answer will be what? 45. Is it clear? Is it clear? Why you people are coming so late? Clear? Now question number 2. Come to question number 2. If you have any problem, you can unmute yourself and ask in between. Clear? Let me check. Can you unmute yourself? Yes, anyone having any problem? No, ma'am. Okay, if you have, you can unmute, otherwise please mute yourself. Clear? Then question number 2 is, they are saying 2NC3 is to NC3 is equal to 12 is to 1, then find N. What we have to do? We have to find the value of N. What we are having, 2NC3 is to NC3 is equal to 12 is to N. The same type of question we were having in permutation also. So what we have to do? We have to just open it. So what we'll have, 2N factorial upon 2N minus 3 factorial into 3 factorial. क्या होता है? NCR क्या होता है? N factorial upon N minus R factorial into R factorial. वही किया है अपन ने. Clear? Is to NC3 N factorial upon N minus 3 factorial into 3 factorial. It is NC3 only, no? Yes. Then just see what we are going to do. LHS we are taking. It is equal to 12 is to 1. Let it be full. Yeah. Solve it all together. Now what we can do? We can divide this by this. Is to means क्या होता है? Divide only. इसको भी ऐसे division का symbol लिख लो. Clear? अब आप देखो कौन सी टर्म यहाँ ऊपर आएगी? ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, है ना? तो मैं इधर लिख देती हूँ 2n factorial into n minus 3 factorial into 3 factorial upon 2n minus 3 factorial into 3 factorial into n minus 3 factorial. Sorry, into n factorial. ये वाला टर्म आएगा ना, ये दो टर्म साथ में आएंगे, ये वाला ऊपर चला जाएगा, n minus 3 into 3 factorial यहाँ आ गया, n factorial इधर आ गया. अब आप देखो क्या कैंसिल हुआ, 3 factorial और 3 factorial कैंसिल हो गया, 12/1. 3 factorial से कैंसिल हो गया. क्लियर? अब हमें ये चेंज करना है. हम किसको चेंज करेंगे? ये 2n minus 3 है, इसको चेंज करने का कोई फायदा नहीं है. 2n को चेंज करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं 2n को? इज इट विजिबल? Not just see here, this side. From this step, come here. So 2n factorial can be written as 2n minus 1, 2n minus 2, and 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 factorial divided by 2n minus 3 factorial. और यहाँ और क्या था हमारे पास? इधर n minus 3 factorial भी था, यहाँ पे n minus 3 factorial. क्लियर? अब इसको भी n को भी चेंज कर देंगे हम. n को कैसे चेंज कर सकते हैं? n minus 1, n minus 2, n minus 3 factorial. क्लियर? अब हमें फैक्टोरियल रिमूव करना है.
क्लियर? अब हमें क्या करना है, फैक्टोरियल को रिमूव करना है। ये देखो, तो ये 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, और यहाँ 12:1 था, ये और ये n से कैंसिल, सिर्फ 2 बच गया ऊपर। क्लियर? सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 2 टाइम्स 2n माइनस 1 2n माइनस 2 divided by n minus 1 n minus 2 it is equal to 12:1। हो गया ये 12:1। अब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये गया, ये हो गया 6, ये 2 कट हो गया। ठीक, अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। सो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम हो जाएगा 4n स्क्वायर। इज इट विजिबल? नॉट विजिबल। So I'm rubbing this part. So what we will have from here, we will have, just see, multiply 2n minus 1 2n minus 2 divided by, or we can take it that side, is equal to 6 times n minus 1 n minus 2। क्लियर हो गया? ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप n की वैल्यू इजी निकाल सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको ओपन अप करो, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4n plus 2 it is equal to 6 times, open this, n square minus n minus 2n plus 2। clear? Now this will be equal to what, 4n square minus 6n plus 2 is equal to 6 times n square minus 3n plus 2। Now you can take common 2 from here. From here you can take 2 common. So if you take 2 common, what you will have? 2n square minus 3n plus 1 is equal to 6 times n square minus 3n plus 2. Now again 2 will get cancelled with this. We'll have 3 here. Here, now open up the bracket and solve it. We'll have 2n square, is it visible? Yes, 2n square minus 3n plus 1 is equal to 3n square minus 9n plus 6। Now just take these all terms that side, ये 2n square को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, minus 2n square, minus 3n को उधर ले जाएंगे plus 3n minus 1। ये टर्म हम पूरी टर्म हम कहाँ ले गए, is equal to 0। अब you solve it, तो इसको अपन पहले लिख देते हैं, 3n square minus 2n square is what, n square, and then minus 9n plus 3n minus 6n, and then plus 6 minus 5 is plus 5 is equal to 0। Now this is a quadratic equation, you all know n square minus 6n plus 5, क्या इसके वो factors होंगे, minus 5 and minus 1। clear? So factors हो गए minus 5 and minus 1, so n की वैल्यू क्या हो गई, ये हो जाएगा आपका n minus 1 n minus 5, n minus 1 और n minus 5 इसके factors हो गए is equal to 0। so your value of n will be equal to what, n is equal to 1 और n is equal to 5, n is equal to 1 या फिर n is equal to क्या हुआ, 5 हो गया। क्लियर? ठीक है, n is equal to 1 या n is equal to 5 will be your answer। अब आपको who will tell me one value सही है या 5 सही है, what we are getting, if you are not, if it is not visible, just see, you are getting the factors n minus 1 n minus 5 is equal to 0, this implies either n is equal to 1 or n is equal to 5, but we can have only one value. Which value is possible? Anyone who can tell? 5. 5. Very good. 5 is the correct answer. Why 1 is not possible? Because we know that n is always greater than r. n की वैल्यू r से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आप यहाँ देखो NCR, NC 3 है, तो यहाँ पे भी r की वैल्यू 3 है, तो 3 से तो ज्यादा ही होगी, 3 से कम नहीं हो सकती n की वैल्यू। Is that clear? Then come to question number 3. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, how you wrote 2n factorial? How you break it? 2n factorial. I will tell you once again. Wait a minute. Why you didn't ask that time? Huh? Wait. Just see.
Do you remember how you used to calculate if you are having 5 factorial upon 8 factorial upon 5 factorial? How you used to calculate? Do you know this? Yes, ma'am. Yes. How? We do it as 5 factorial. हम इसको जो बड़ा होता है उसको चेंज करते हैं हमेशा या छोटे को चेंज करते हैं? जो भी बड़ा अपना बड़े factorial होता है, we change that. So this is 8 factorial. So it can be written as 5 factorial into 6 into 7 into 8. Clear? ऐसे ही आपका था 2n factorial upon 2n minus 3. इसी में confusion है ना? इसी चीज में confusion ma'am. होगा. हाँ. अब कौन सा बड़ा है? 2n minus 3 बड़ा है, 2n बड़ा है. 2n. 2n बड़ा है, तो इसको चेंज करेंगे. तो हमने 2n लिखा, 2n minus 1, एक एक माइनस करते जाएंगे ना. 2n minus 2, 2n माइनस कब तक करते जाएंगे? जब तक जो हमें डिनोमिनेटर में है वो नहीं आ जाता. 2n minus 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें ये कैंसिल आउट करना है ना. हम फैक्टोरियल कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं. कैन वी कैलकुलेट द फैक्टोरियल? No, ma'am. विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. कैलकुलेशन पार्ट बहुत हाई हो जाता है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से चेंज करते हैं ताकि हमारा ये जो डिनोमिनेटर में 2n minus 3 है इधर से कैंसिल हो जाए. एक अपना था n और n फैक्टोरियल और n minus 3 फैक्टोरियल. एक क्या था अपना? n फैक्टोरियल और n minus 3 फैक्टोरियल. तो n फैक्टो हम चेंज किसको करेंगे? n फैक्टोरियल को. कब तक करेंगे? जब तक हमारा n minus 3 ना आ जाए. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? n minus 1, n minus 2 and then n minus 3 factorial. Is that clear? Yes, ma'am. Okay then. Next question, question number 3. Very good. The ones who are having any problem, please ask in between only, so that you should be clear with your doubts. Now next is question number 3. How many chords can be drawn? They are saying how many, if you can see the book, how many chords can be drawn? You know the meaning of a chord? It's an important, it's a good question and it's very easy, but you have to think. What is a chord? Anyone who can tell? No one knows. हाँ, चले जाए 6th में वापस. Chord क्या होता है बेटा? Chord is what? In a circle, if we are having 2 points on the circumference of the circle. अगर हम 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक कॉर्ड. क्लियर? अब वो अगर कॉर्ड सेंटर से पास करती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डायमीटर. अगर वो सेंटर से पास करती है तो हम उसको डायमीटर बोलते हैं, अदरवाइज वो क्या कहलाती है? कॉर्ड. तो सर्कल पे इफ यू आर हैविंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल and we join these 2 points on the circle, we say it as a chord. Clear? Now what the question is, they are asking how many chords can be drawn through 21 points on a circle. If you are having, like we are having here 2 points, with the help of 2 points you can draw one chord. 2 points you need to draw a chord, and they are saying we are having 21 points on the circle. So total how many points are there? 21. And for a chord we need how many points? For a chord we need how many? 2 points. Now anyone can tell in how many ways this can be done? अच्छा, you first tell me, we have to do selection or permutation करना है या combination करना है इसमें? Yes. What happened? No one. Can you unmute yourself? Yes, you can. If you don't know, please say no, ma'am. Just see, you are having in total, you are having 21 points. In total, how many points you are having? 21 points. Out of 21, you have to do the selection of 2 points. So how you can do 21? Direct answer, 21 C2 ways. What is the answer? 21 C2 ways. Out of 21 points, if we select 2 points, we will get a chord. So how many ways we can have? We can have 21 C2 ways. So it can be written as 21 factorial upon 21 minus 2 is 19 factorial into 2 factorial. So you will have 20 into 21 by 2, 2 tens are, it will be 210 ways. What is the answer? 210 ways will be your answer. Is that clear or not? It's an important question, so please keep in mind.
2 points are needed to draw a chord, and in total we are having 21 points. So in how many ways this can be done? In 21 C2 ways. Clear? Then next is question number 4. And how many ways can a team of 3 boys, we have to make a team of 3 boys and 3 girls. A team is to be selected of 3 boys and 3 girls. Clear? Team is to be selected of 3 boys and 3 girls from 5 boys and 4 girls. So in total we are having 5 boys. In total we are having how many? 4 girls. Clear? And we have to select a team of 6. We have to select a team of 6 in which we should have 3 boys and 3 girls. टोटल हमारे पास बॉयज कितने हैं? 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं. अब इसी में से सिलेक्शन करेंगे हम. सिलेक्शन है, अब वापस देख लो मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया सिलेक्शन. So we are doing selection. No arrangement is there. We are talking about selection. So if we are talking about selection, out of 5 boys, we can select 3 in 5C3 ways. हम 5 में से 3 बॉयज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C3 वेज में. Multiplied by out of 4 boys we can select 3 girls in 4C3 ways. टोटल होता है ना यहाँ पे, टोटल और जितने करने हैं सिलेक्शन वो यहाँ आता है. क्लियर? मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता है क्यों किया? क्योंकि हमें टीम कितने की बनानी है? ये जो टीम है वो 6 मेंबर्स की होनी चाहिए. टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 6 मेंबर्स. अगर यहाँ 6 आता तो हम ऐड करते, पर यहाँ तो 3 है. 3 into 3, तभी तो हमारा 3 और 3 6 होंगे. क्लियर? So now we will not do calculation part. You can do it by yourself. 4C3 5C3 into 4C3 will be your answer. This was your question number 4. Is there any problem? Then come to question number 5. This exercise is very easy. Question number 5. Find the number of ways of selecting 9 balls. 9 balls to be selected out of 6 red balls. Out of 6 red balls, I'm only writing red for our 6 red balls, 5 white balls, 5 white balls, and 5 blue balls. 5 blue balls. And the condition is if each selection consists of each selection will have 3 balls, I think so. Yes, 3 balls of each color. 3 balls of each color. तो हमें टोटल कितने सिलेक्शन करने हैं? 9 balls are to be selected. टोटल 9 balls सिलेक्ट करनी है और 3 balls हर कलर की होनी चाहिए. Now you only tell me, please unmute yourself and let me know. हमारे पास टोटल रेड कितनी है? 6. 6 में से हमें सिलेक्ट कितनी करनी है? हमें 3 बॉल सिलेक्ट करनी है हर कलर की. तो 3 रेड होनी चाहिए, 3 व्हाइट होनी चाहिए, 3 ब्लू होनी चाहिए. Now tell me how we can select 3 balls out of 6C. 6C3. 6C3. R नहीं 3. R की वैल्यू क्या है? 3. तो 6C3 में इसमें अपन कौन सी रेड बॉल सिलेक्ट कर सकते हैं? व्हाइट बॉल्स का कौन बताएगा? 5C3. हाँ, 5C3. And then blue balls. Yes. What happened? Blue balls. 5C3. 5C3. Now what we will do? Multiplication or addition? Here what will come? Multiplication will come or addition will come? Yes. Don't hesitate. If you will be wrong, I will explain you. Multiplication. Multiplication. Why? Just see. Here we are having 3 plus 3 plus 3. Now they are 9. Clear? अगर मेरे पास यहाँ होता 9C9, तब मैं इंटू नहीं करती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 9 सिलेक्शंस हो गए हैं. अभी तो हमारे पास 3 सिलेक्शंस हुए हैं, ये 3 हुए, फिर हमें 6 और करने हैं ना. 6 सिलेक्शंस और बाकी है. 6 सिलेक्शंस आर लेफ्ट. So for 6 selections we will multiply.
Clear? Whenever things are not complete, we do multiplication, but when it is complete, then we do addition. We'll have some questions, then you will understand. हम करेंगे ऐसे questions ताकि आपको समझ में आए. So calculation part again I will not do. You can do the calculation part so that you should have practice of it also. We'll write the answer directly. So your answer will be 6C3, 5C3. It will be 2000 ways. Calculate it and check it afterwards. 2000 ways will be there. Clear? Now question number 6 is there. Question number 6. Just see what is question number 6. Determine the number of 5 card combination out of the deck of 52 cards. If there are exactly 1 ace in each combination. We are having in total of 52 cards. And what we want? 5 card combination we want. 5 cards. We have to select. Out of 52 cards, we have to select 5 cards. But we have a condition. What is that condition? That we should have 1 ace and plus 4 other cards. 4 other cards. हमारे पास सिर्फ एक ace होना चाहिए. Ace means you know what is ace? You know the meaning of cards because in probability in class 10 you must have studied about cards. If you don't know, please let me know so that I can explain you. Yes. Have you all played cards any time? छोटे में खेलते थे ना? No, ma'am. No, पत्ते पे पत्ता ये वो छोटे बच्चे करते हैं ना? Just see. If you don't know, just see. We are having 52 cards in total. हमारे पास जो cards होते हैं, cards में 52 cards होते हैं total. In total, clear? In 52 cards में what we are having? We are having 4 ace, 4 kings, 4 queens, and 4 jacks, and then उसके बाद हमारे पास 4 सारे 4 होते हैं. 10 होगा, फिर 4 9 होंगे, फिर 4. क्यों 4 होते हैं? क्योंकि हमारे पास 4 थिंग्स होती है. एक तो होता है हमारे पास क्या, डायमंड. अगर आप कार्ड्स कभी देखोगे तो उसमें क्या क्या होता है हमारे पास, ऐसा डायमंड होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डायमंड. फिर हमारे पास एक क्लब होता है. आप तो ऐसे ही ध्यान रखो, एक डायमंड होता है, एक क्लब होता है. दोनों, ये डायमंड आपका क्या होता है, रेड कलर में होता है. ये क्लब आपका होता है ब्लैक कलर में. फिर हार्ट होता है. Heart is also of red color, and then heart, club, diamond, and one more is there. Club and Spade. Huh? Even I am not remembering. Spade. Huh? What? Spade. Not spade. Diamond, heart, club, and I don't remember what is the fourth one. Fourth one is also there, but Spade. Huh? And spades. Spade. Spade is there. Very good. Spade is there. So you all know. And also you are not speaking up. Club, heart, diamond, and spade. 4 types of cards we are having, and each type of is having 13 cards. Clear? 13 में कौन से आता है? 1 ace, king, queen, jack, 10, 9, 8, 7. Like this, you will have 13 different types of cards of each color. Each color नहीं कहेंगे अपन, 13 different cards of each type. Each type में कौन से आते हैं? Diamond, club, heart and spade. अब diamond और जो heart होते हैं वो red color के होते हैं, और जो club और spade होता है ये black color के होते हैं. ठीक है, तो in all आपके पास 26 black cards होते हैं और 26 red cards होते हैं. Clear? Now just see, our question is what? We want 1 ace. अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे. हमारे को क्या चाहिए? 1 ace चाहिए. तो टोटल ace कितने होंगे हमारे पास? Anyone can tell? How many total ace we are having? 4 होंगे, और 1 of each type. 4 ace है हमारे पास. मैंने बताया 4 सब तरह के होते हैं, तो 4 में से हमें कितना सिलेक्ट करना है? 1. Out of 4 ace we have to select 1 because we want 1 ace. अब into, अब 4 तो हमने ले लिए. अब 52 में से 4 हटा दो तो कितने बचे? 48, 49, 50, 50 and 52. ठीक है, 48 cards are left, and now out of 48 cards, how many we have to select? We have to have a combination of 5 cards. हमारे को 5 कार्ड कॉम्बिनेशन चाहिए. सिर्फ हमारे पास एक आया है अभी, तो 48 में से हम कितने सिलेक्ट करेंगे? 4.
क्लियर? अब हमने क्यों 52 में से नहीं किया? 52 में से क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी एक एस आ चुका है यहाँ पे और हमें एक एस ही चाहिए। अगर हम इसमें से करेंगे तो एस के चांसेस भी तो आ सकते हैं, एस भी तो आ सकता है। क्लियर? दिस विल बी योर आंसर 4c1 into 48c4. 4c1 into 48c4. Now when you will calculate it, you will get the answer 77820. Please do the calculation. This I am doing it directly just because we have done it so many times, and you should have a practice of it also. Clear? It's time now. Thank you, class.